whether you win or lose. Really a classical dancer, Kuchipudi classical dancer. Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their story and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं उन्हें मैं बुलाऊंगी एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट। आप उन्हें कोई भी काम दीजिए आर्ट से रिलेटेड, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे फिर वो रेजिन आर्ट जैसी कंटेम्प्रेरी टेक्निक हो, वो हर एक काम, हर एक टास्क बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली कंप्लीट कर सकती हैं। वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है एंड ट्रस्ट मी, शी इज जस्ट अमेजिंग। सो लेट्स वेलकम कल्पना। हाय कल्पना, हाउ आर यू? Hi ma'am, I'm fine. How about you? बिल्कुल ठीक। एंड कैसे हैं आप? Fine ma'am. आई एम सो एक्साइटेड कल्पना कि मुझे आज आपसे वन टू वन कॉन्वर्सेशन करने का चांस मिला। यूजुअली हम वर्कशॉप में मिलते हैं, क्लासेस में मिलते हैं, बट एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं? एक दूसरे के बारे Yes में ma'am. जानने का मौका मिल Sure. जाए। Yes ma'am. We should always राइट। know about each other. डेफिनेटली कल्पना, एंड मुझे लगता है कि वी शुड स्टार्ट दिस इंटरव्यू विद वन क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। ओके, सो ओवर टू यू। I'm Kalpana. So I'm from a small place called Sompeta in the border of Andhra Pradesh and Orissa. So like all my education and all till plus two I've done here only. Then after plus two I got married at a very young age. Then so I've shifted from this place to play Mumbai. So my during my education and also I had a great opportunity to have a taste of every kind of art actually, like singing, dancing, into acting, painting, craft, everything. Like my mother was my inspiration because she used to help me a lot in all these things. So that is my brief about childhood. डेफिनेटली, एंड आई थिंक कल्पना, आपको वर्सेटाइल बुलाना मेरा बिल्कुल गलत नहीं था। द वे यू हैव लिटरली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, दैट आपका जो बचपन है वो हर एक चीज से घिरा हुआ था, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो पेंटिंग हो, क्राफ्टिंग हो। एंड द बेस्ट पार्ट कि आपकी मॉम का, आपकी फैमिली का, आपके सिबलिंग्स का, इवन कजिन्स का आपको एक बहुत मेजर सपोर्ट था। तो कल्पना, एज यू सेड, 12th के बाद ही आपकी शादी हो गई। सो इतनी जल्दी शादी करने के बाद का एक्सपीरियंस, क्योंकि आप बहुत यंग होते हो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चीजों को समझने के लिए, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बैक देन? It was a very bitter experience actually because plus two, see nowadays kids they like usually after they get married only at late 30s and all. So it is very young age. Like I was in my teenage, so I got married and I didn't know anything about family responsibilities, everything. So I had to learn it in a hard way, but I don't mind because I learned it in my way and it was a good experience. And it was also like I always wanted to have a perfection in my thing. So so I tried to learn from others. I used to communicate, I used to ask and learn from others. एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी कल्पना। बट आप मुझे एक और चीज बताइए कि जैसे वेडिंग हुई है ना, शादी हुई, आपकी शादी के बाद चीजें चेंज होना शुरू हुआ, बट आपका जो अंदर का आर्टिस्ट है वो कितना बदला? आपने अपने अंदर के आर्टिस्ट को कैसे जिंदा रखा? It was always like an artist is always an artist. So I used to like be creative in everything what I used to do, whether it is cooking or decorating the house interiors, or it is for my kids project work, craft, their fancy dress, everything. So like it is always like a way of keeping up live my art. राइट राइट It was always live. यस, एंड कल्पना, तो गुड टू हियर दैट आप पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेकर, एक्सपीरियंसेस को लेकर। आपसे बात करते करते मुझे लग रहा है कि हर एक आर्टिस्ट की कितनी डिफरेंट स्टोरी होती है, कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से वो आते हैं, है ना? राइट नाउ वी आर Yes, ऑन ma'am. सेम Yes, yes. पेडेस्टल, बट आपका बैकग्राउंड कितना डिफरेंट एंड इमोशनली कितना रिच है, right? So I'm really Yes, happy ma'am. for Yes. you whatever you are achieving right now. So back then, उसी उन्हीं दिनों में वापस जाते हैं दोबारा से। तो कल्पना, आपने कभी सोचा नहीं अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज को दोबारा करने के लिए आफ्टर वेडिंग? Yes, ma'am. I've continued actually, but not in a regular way, but it is in a distance education. So All right. I have done my MA English Literature. So Oh, that's I'm a amazing. postgraduate in English Literature. That's And then amazingly great.
I tried to get into a job, but like it was on not a very good. I didn't give a complete importance to that actually. So I Yeah. wanted to be with my kids. I wanted them to grow in a right way. Like I Yes. wanted to give all the activities, art, education. So I don't want them to be in others' care actually. I wanted to give 100% from my side. एंड मुझे लगता है कि जो मदर होती है ना उनसे बड़ा दर्जा और किसी का नहीं हो सकता है ना। आप मतलब आई एम Yes, जस्ट ma'am. इमेजिनिंग योर लाइफ के कैसी रही होगी, किस तरीके की होगी। एंड आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपके किड्स थे, आपके हस्बैंड, आपकी पर्सनल ग्रोथ एंड देन आपकी स्टडीज भी। सो हैट्स ऑफ टू यू कल्पना, लिटरली आप जिस तरीके से बैलेंस करती हुई आ रही है, Thank दैट्स you. अमेजिंगली गुड। हाउ अबाउट योर बेटर हाफ, योर हस्बैंड, जब वो आपको इतनी सारी चीजें करते हुए देखते हैं और इतने सारे काम करते हुए देखते हैं कि कल्पना ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं और सब कुछ इतने परफेक्शन के साथ कर लेते हैं, सो हैज एक रिएक्शन, कैसे रिएक्ट करते हैं वो? He always wanted me to grow up like in a best way. But the see for everyone's experience is not like 100% onto the better side. Mine Yeah. is onto the tougher side. Alright. So I had to keep up with his expectations. Right. Actually, speaking truthfully, like openly, it was not 100% support from his side, but I tried my best to be myself, like to grow in every way. एंड आई थिंक जो आपने जिस तरीके से ट्राई करा और उस ट्राई और उस पर्टिकुलर जगह पर गिव अप ना करने की वजह से कल्पना राइट नाउ यू आर ऑन एसडी स्टूडियो सीजन। एंड आई थिंक ये उसी Yes, का ही ma'am. है ना, ये उसी का ही फल है, उसी मेहनत का जो आपने करते रहे, आपने कभी गिव अप नहीं करा। एंड यू नो व्हाट कल्पना, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली। See, as a woman, as an artist, as a homemaker, as a mother, as a wife, we have different responsibilities to play, right? इतनी सारी responsibilities, इतना सारा काम, and as I always say कि अपनी personal, self care के ऊपर भी आपको उतना ही ध्यान देना है ताकि आप खुद को भी नरिश कर पाए, कि माइंड को भी नर्चर कर पाए। तो कहीं ना कहीं जाकर एक टाइम ऐसा आता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बोलते हैं, नहीं अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होना है। तो जब कल्पना को रिलैक्स होना होता है, थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, ठहरना होता है, तो कल्पना उस टाइम क्या करते हैं अपने आप को शांत करने के लिए, काम करने के लिए? I usually meditate, ma'am. Hmm. Daily I meditate for some time, and then I do little bit of yoga and all. So that gives me good Power power. to do Yeah, more. yeah. एंड जब आप हर सुबह जब आप उठे हो और अपना दिन शुरू करते हो, अपना दिन स्टार्ट करते हो, एक मोटिवेशन चाहिए होती है कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरी मोटिवेशन है। सो कल्पना की मोटिवेशन क्या है? My motivation is my children. So I want to be there for them for like as long as they need me and any time. So they are my motivation. That's it. You're a great mother, Kalpana. You're a great mother, right? And कितने साल के हैं वो और कौन सी क्लास में है? My son is Abhiraj. He's into his intern in medicine, and Oh. my daughter is into BTech second year. ओके ओके, एंड आई थिंक फिर तो वो मम्मा को पूरा सपोर्ट करते होंगे जो भी आप कर रहे हो, है ना? कैसे रहता है Yeah. उनका रिएक्शन, कैसे रहता है आपके The आर्ट एंड आपके क्राफ्ट को देखकर? Yeah, ma'am, they support me a lot, and regarding this brand name and all, my son has helped me to design and all. That's He has amazing. given me the logo and everything. And whatever the technical things, whatever I don't know, like my daughter helps me. Amazing. And for the part of marketing also, she keeps helping me a lot Oh by my God, encouraging me. And that's great. usually she shares all my posts in her Insta, and she Hmm. asks her friends and all to keep sharing my ID and encourage me. And I truly like to congratulate them. As a kid, बहुत ज्यादा important होता है अपने पेरेंट्स को उनके स्पेशली इस पर्टिकुलर टाइम पे सपोर्ट करना जहाँ पर वो इस एज में आकर कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। दे आर डूइंग सीरियसली अ ग्रेट जॉब।
आपको सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली ऐसी चीजों में जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा उनकी मदद की जरूरत होती है। सो कल्पना, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अबाउट योर ब्रांड। ओके, एज यू सेड कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, एंड जितनी भी चीजें हैं दे आर हैंडलिंग सपोर्टिंग यू। सो कल्पना, आपके ब्रांड का नाम क्या है? सबसे पहले आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है, प्लस ये मार्केट को, रेजन मार्केट को क्या ऑफर कर रहा है आपका जो ब्रांड, मुझे इसके बारे में जानना। Yes, ma'am. Actually, I was searching for a name like it should start with my initial Kalpana K. And then I'm a great devotee and a fan of Krishna. So like Uh-huh. I wanted in that way too, I wanted K as initial. So I tried many Sanskrit names. Like I am very fan of reading Bhagavad Gita and all types of Oh. scriptures and everything. So like I tried many names, but and then suddenly my son one day he told me that your art is an inspiration to all. So why don't you keep it as Inspira? So I said, okay, that is good, but I want my name to be added, like my initial to be added. Yes, So that is yes, the yes. reason it is Inspira art. इंस्पायरा। माय Yeah. गॉड, इतना मैंने लिटरली आपकी बहुत सारी पोस्ट, रील्स, आपकी वीडियोस, आपकी स्टोरीज देखी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई ट्रूली एडमायर योर वर्क अ लॉट, एंड Thank you, स्पेशली ma'am. द वे यू आर ग्रोइंग नाउअडेज ऑन सोशल मीडिया, द वे यू पुट कंटेंट, इट्स ट्रूली कंटेम्पररी, इट्स फाइन। बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत ही अच्छा। Thank और you, मुझे ma'am. पता लगे कि अब इन सब चीजों के पीछे कौन है, आपके प्यारे बच्चे है ना, जो आपको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सो बिग हैंड्स फॉर Yes, देम, ma'am. लवली, दैट्स वंडरफुल। Yeah, thank you. Thank you, ma'am. सो कल्पना, आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजिन के अंदर सबसे अच्छा क्या बनाती है, सबसे बेहतर, तो आप क्या कहेंगी? I like jewelry a lot, ma'am. हाँ, यूर इनटू ज्वेलरी। और ज्वेलरी Yeah, हर कोई चूज भी नहीं करता yeah, है ना, बहुत कम लोग ज्वेलरी कर रहे हैं। आपने ज्वेलरी yeah, मार्केट ma'am. पिक करी, प्लीज गो ऑन, क्या क्या है ज्वेलरी के अंदर आपकी स्पेशलिटी? Actually, one point of time, I had a wish to do a jewelry designing course, actually. So I couldn't do that. So I had a very great opportunity in this resin. So because whatever idea I get, so I can do it with a resin art. With resin, it is very easy to make any type of design in jewelry, especially. So that's the reason I've chosen jewelry as my specialty. यस, एंड यू नो, जब जो भी हम डिजाइन करते हैं, स्पेशली रेजिन के अंदर इतने सारा कंपटीशन है। नॉट इन इंडिया, इंडिया के अंदर भी रेजिन आर्ट ग्रो कर रहा है बाय द टाइम, बट वेस्ट में बहुत कंपटीशन, अगर हम वेस्टर्न आर्टिस्ट से अपने काम को कंपेयर करें। सो ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो पर्सनली आई फील जहां पर इंडियन रेजिन आर्टिस्ट बेटर कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर आपने ज्वेलरी को चूज करा, आप इसको और बेटर रिफाइन करना चाह रही है, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टेप, यू नो, इस Yes, इंडस्ट्री में है ना काम करने के। इट्स अ yes, ग्रेट स्टेप yes. इंडीड, सो वेल डन, वेल डन। सो कल्पना, अब मैं जानना चाहती हूँ कि अभी मैं, मुझे पता है कि आप रेजन में प्रो हो, आप सब कुछ कर लेते हो रेजन के अंदर, आपको कुछ भी दे दे रेजन में काम करने के लिए, ना बहुत अच्छा डिलीवर भी कर पा रहे हैं। बट अगर मैं उन स्टार्टिंग के डेज की बात करूँ, वो नया नया टाइम जब आपने रेजन करना शुरू किया ही था, तो उस टाइम क्या चैलेंजेस आप फेस करते थे, क्या मुश्किलें आती थी रेजन के साथ काम करने में? Actually, I want to give a little bit of introduction how I came into resin art. Yeah, Because sure. one day when I was, is it clear, ma'am? Yeah, please go on. Yeah. One day when I was going through the ad, suddenly I came up into this Insta about SD ad about this Packaging. course, a Yeah. free course. So like I immediately, I don't know what is the reason, but I tried. I immediately I got registered into the course, and then within one day I've decided that after the course, listening to the session, within a day I've decided that I want to get into this art. Then next day I have spoken to you people, and then I came into this thing. So like initially my first day of class, like I was like sweating literally, and I was so nervous that I didn't know anything about it, and I was thinking that like whether I'll be able to do this. It is some kind of chemical, and I don't Yeah. know what kind of things I can do with this, Yes, whether yes. I'll be able to understand its nature and everything. But after listening to a few classes, like maybe 3 to 4, I was so comfortable with handling this resin and other materials. Like it was like a cakewalk then. या एंड मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट की जर्नी कुछ इसी तरीके से शुरू होती है, स्पेशली रेजन के अंदर। बट पहली 2-3 क्लास में उसके साथ फेमिलियर हो जाना, ये अचानक नहीं होता कल्पना। इट्स ऑल अबाउट कि आप
पहले से कितनी ज्यादा स्किल्ड हैं, किसी भी चीज Yes, को ma'am. लेकर, अडेप्ट Yes, करने yes. में बहुत टाइम लगता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपने पहले जितनी भी प्रैक्टिस करी, चाहे वो किसी भी ऑनर में हो, सो दैट लिटरली हेल्प Yes, आपके that लिए, is true. है ना, टू अडेप्ट प्रेजेंट, राइट। That is सो कल्पना, मैं दोबारा से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपकी लाइफ के बारे में, दैट नाउ टाइम की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दे आर स्किल्ड, दे नो देयर वर्क, they know how to generate things, how to generate business, and बहुत सारे आइडियाज भी हैं उनके पास, बट हर एक इंसान वो मेजर स्टेप नहीं ले पाता जो आपने लिया अपनी लाइफ, अपने लिए कुछ करने का, अपने लिए कुछ कर दिखाने का, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों के लिए आप क्या उन्हें एक लेसन देना चाहेंगे अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड, कि वो भी वो स्टेप ले सके अपनी लाइफ में, वो बैरियर ब्रेक कर सके जो आपने करा और जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं? Yeah, ma'am. Like it is not. I strongly feel that a person has to motivate himself. It doesn't come from outside. So we should have motivate ourselves to get into or pursue whatever we want, whatever is our passion. To push ourselves, be positive. There might be very whether you win or lose. You True, take it आपको बस equally. राइट। Whatever it is, so just blindly, I will say that it's just go blindly, and I'm sure you'll enjoy whether it is whatever it is. नो, आई टोटली अग्री विद यू कल्पना, टोटली अग्री विद यू। हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव साइड होता ही है। इट्स ऑल ए पर्सन पर्सपेक्टिव कि वो कौन सी साइड को चूज करना उसको चाहिए, है ना, एट दैट टाइम। एंड आई थिंक पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है आजकल के टाइम पर, Very difficult. स्पेशली टुडेज जनरेशन, दे आर जस्ट टोटली इनटू सोशल मीडिया थिंग्स, मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड मल्टीपल विजुअल्स हम देखते हैं, और वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। बट आई थिंक कल्पना, अगर वो भी आज आपका इंटरव्यू देखेंगे, आपकी स्टोरीज को एनालाइज करेंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें भी ऐसे जज्बा मिलेगा, ऐसे उनको स्ट्रेंथ मिलेगा कि वो भी कुछ कर दिखाएं अपनी लाइफ, है ना? Yes, yes, जी। yes. सो कल्पना, नाउ आई वांट टू नो अबाउट योर ब्रांड रेवेन्यू, कंपनीज रेवेन्यू। अभी तक आपने कितने ऑर्डर्स जो है वो फुलफिल करे हैं रेज्यूम के अंदर, कितना आपने प्रॉफिट जनरेट करा है? Actually, it is not a profit, ma'am. Actually, I've just started my journey, and I'm still, I should market it properly, but I'm in a very small place, and I have very limited resources, and the raw material is also a great challenge for me. Yeah. So like I'm still growing slowly. It is just an introduction, you can say. I hardly get many orders, but still I'm not disappointed. Yes, and I think Kalpana, SD Studios will definitely gonna help you in terms of orders, business, and audience attraction, क्योंकि आप एक बार एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आए हैं जहाँ पर आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, और पीपल गॉट टू सी योर वर्क, पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम। तो मुझे लगता है जो जितने भी ऑर्डर्स हैं वो बाय द टाइम आप लेकर आएंगे, मे बी इन थर्ड सीजन ऑफ SD Studios आप मुझे बताएं कि मैंने इतना इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर दिया है ना? Sure, ma'am. Thank you. If you, Yes. I think your wishes will work out faster. Definitely, definitely. Let's manifest together. Yeah. Yes, Okay. ma'am. So, Kalpana, related to orders only. So, आपको वो दिन याद है जिस दिन आपका पहला ऑर्डर आपको मिला था? स्टोरी कैसे मिला? चाहे वो छोटा सा ऑर्डर था, क्या थी उसकी स्टोरी, मतलब कैसे आया वो आपके पास? Yeah, it was a far distant friend. So it was my first order when they saw my jewelry, especially earrings. They liked a lot, and they placed order for their daughter. So I was so much excited, and I've thanked them and I've told them that this is my first order from you. So like it was very much exciting because not within the family, outside the family, I got an order. So it was like exciting for me. Right, Yeah. 100%. And can I see your earrings, Kalpana? I think आप अपने brand के Yes, earrings आपने ma'am. डाले. Yeah, yeah, Oh yeah. my goodness, Yeah. it's so pretty. Is this a petal? Yes, ma'am. I made it with jewelry wire, and then I filled with Oh my resin. God, it's pretty. It's really nice. मैं बहुत टाइम से आपकी ड्रेस के साथ ऐसे उसे मैच कर रही थी आपको देखते हुए कि आपने आपने कुछ तो डाला है, कुछ, और जैसे आपने इसे पॉइंट कर, ओ माय गॉड, आप ज्वेलरी की बात कर रहे थे, और आप दिस इज मार्केटिंग, ओके, दिस इज एडवर्टाइजिंग, कि आप अपनी ज्वेलरी, अपनी क्रिएशन आप खुद डाल के चलो। दैट्स ग्रेट कल्पना। Yes. जी। सो कल्पना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा, आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है खुद को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर, क्या सोचा है आपने कि आने वाले टाइम पर आपको क्या पर्टिकुलर जो चीजें हैं वो अचीव करनी है? Yes, ma'am. Actually, I've thought of doing a flyer.
so that people will know this is a small place, so maybe everybody don't follow this Insta and all. So like Hmm. I want to reach them through these flyers and all. And Hmm. then I want to go to some nearest places, like bigger towns, and then Hmm. do some exhibitions and all, Hmm. so that I can reach out to them also. So Hmm. for the next few months, this is my little plan. So I think it will No, work that's out. absolutely fine. And मैं हमेशा कहती हूँ सभी को कि 5 years and 10 years plan they are not for artists. हम इतना बिजी होते हैं क्रिएशन में, इतना बिजी होते हैं क्रिएटिव प्रोसेस में कि हम बहुत लंबा टाइम जो है वो नहीं इमेजिन कर पाते. शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं बट क्लियर होते हैं. एंड मुझे ये Yes, ma'am. सुनकर भी बहुत अच्छा लगा कल्पना कि आप भी अपने प्लान्स को लेकर इतनी सॉर्टेड है कि आपको पर्टिकुलर ये चीज चाहिए. जब आप प्लान्स के लिए सॉर्टेड एंड इतना क्लियर रहते हैं ना तो डेफिनेटली उनको पूरा होना होता है. तो आपने सोचा और वो पूरा हो गया. Yes, ma'am. It's like that only. Yes, yes, Yeah. yes, So yes. Kalpana, thank you so very much for being so wonderful for this interview. I love your answers, and I'm just actually getting so inspired with your life journey. And I wish you all the best for SD Studio Season 2. And I really wish कि जो particular छोटी जो चीजें जो पूरी नहीं हुई हैं वो सारी की सारी इस particular season के बाद पूरी हो जाए. Right? Thank you so much, ma'am. Thank you so much, and it's very nice talking to you. सेम हेयर. एंड अभी हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. मैं आपको लेके जा रही हूँ नेक्स्ट सेगमेंट में जिसका नाम है द रैपिड फायर राउंड, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी Sure, कुछ ma'am. रैपिड क्वेश्चन. ठीक है, और आपको मुझे उनका ऐसे क्विकली आंसर देना है. ओके सो Sure, okay, shall I ma'am. start? Yeah. Yes, yes, Okay, so please. rapid fire round with Kalpana. Your first question, Kalpana. Favorite color to work with in resin art? Pink. Pink. Okay. वैसे भी you are from jewelry background, तो आपको definitely pink pastel से ज्यादा पसंद आएगा. So acrylic or epoxy resin? Epoxy. All right. Abstract or realistic resin art? Epoxy, ma'am. Okay. Abstract or realistic resin Realistic art? resin art. Okay. Realistic resin art. All right. Resin jewelry or larger resin pieces? ये तो मुझे इसका आंसर मालूम है. Jewelry, ma'am. Okay. Glossy or matte finish? Glossy. Okay. Preferred resin art tools like silicone mold or freeform pouring? Freeform, ma'am. Okay. Any favorite art exhibition you have visited? Yes, ma'am. I've visited many art exhibitions. Actually, we used to live a few years back in Bahrain. So, like, I used to go and visit many international art festivals. Okay. So, every year they used to conduct an art festival. That was my favorite, actually. All right. So you are an early bird or night owl? Night out. Indeed. Okay. Your favorite music choice? Melodies, ma'am. Any melody. Okay. All right. So कल्पना, मैं चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू का जो एंड हो वो आपकी एक फेवरेट मेलोडी के साथ होना चाहिए. ठीक है? As you said, you were into singing as well during school days. So It's छोटी been सी लाइन. quite long. No problem. मैं ही हूँ यहाँ पे सिर्फ. एक छोटी सी लाइन आपके कोई भी फेवरेट सॉन्ग की. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा शिकवा नहीं, नहीं, शिकवा शिकवा. नहीं, शिकवा नहीं. Thank you. Lovely, Kalpana. That's amazing. Thank you so very much. Thank You are you so much, so ma'am. sweet, and I really want to meet you in person. Super soon. Just like you, ma'am. जल्दी मिलेंगे और जल्दी आपसे मिलने का मुझे मौका मिले और उसके बाद हम बहुत सारी ढेर सारी और बातें करेंगे. ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा. See you super soon. All the very best. Take care. Bye bye.